Good evening, one and all. I am Dr. Piyush Pal from Goel Institute Technology and Management and Innovation Ambassador, going to present my topic of seminar, Planning and Managing Pre-Incubation Support in Higher Educational Institute and Resource Mobilization Strategy. So basically, uh, in what in that topic, what we deal with, what is the need of pre-incubation and incubation support in academia. So हम ये सारे प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन की जो बात करते हैं इन एजुकेशन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों करते हैं. The government of India are trying to support the excel, the innovation and startup like things in our country also. It is not only theoretical study. It is the study revolving around the innovation and startups. तो कैसे हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एवरीवन इज गोइंग टू बी अ जॉब प्रोवाइडर, नॉट जॉब सीकर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है कि हर कोई अब जॉब गिवर बने, और national innovation startup policy and all these things comes together. So वो स्टूडेंट से ये चाहती है कि हर स्टूडेंट में ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए. जब वो 4 साल बाद आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ से कॉलेज से निकले तो उसके पास अगर जॉब ना हो तो वो अपना एक जॉब सेटअप कर सके. इसी के लिए उसने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात की है, जिसमें सबसे पहला आता है क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट. दूसरा पॉइंट है मॉडरेट स्टेकर, रेडी टू एक्सपेरिमेंट्स, गेट डिस्टर्ब्स, प्रॉब्लम अराउंड्स, what are the problems around, gather team support, and last one problem solving attitude. ये जो लास्ट वन पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में सबसे जरूरी पॉइंट है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अगर किसी स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाएगा. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग से नहीं आएगा. इसके लिए हम आपको इसके लिए कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ लैब सेटअप करनी पड़ेंगी, जिनको हम कहते हैं प्री इंक्यूबेशन सेटअप या प्री इंक्यूबेशन सेल, कि बच्चा वहां जाकर के कुछ बना सके, कुछ सीख सके. लास्ट ईयर फाइनल ईयर में जो एक्टिविटीज होती है प्रोजेक्ट्स की और सेमिनार प्रेजेंटेशन की, वो एक प्रिलिमिनरी एक्टिविटी होती है कि हम लोग कैसे एक अपना प्रोजेक्ट बना सकें, कैसे हम उसे प्रोजेक्ट को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में डेवलप कर सकेंगे और फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में डेवलप कर सकें. तो शुरुआत जो होती है वो अंडर ग्रेजुएट्स और फिर फाइनल ईयर में जाकर के होती है, जब बच्चा अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, बनाता है, और जब वो एक्सपेरिमेंटल या कुछ वर्क करता है तो उसमें ही और सी इज मोर, वो और ज्यादा सीखता है जब उसमें एक प्रॉब्लम्स हैव एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट और माइंडसेट ज्यादा डेवलप होता है. तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज समवन रिलेटेड टू इंक्यूबेशन सेल, प्री इंक्यूबेशन. और इंक्यूबेशन क्यों जरूरी है? ताकि we try to instill a basic learning or creating activity in terms of some development of skill. We develop some skills. वो skills प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हो सकती है,
प्रॉब्लम सोसाइटल भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम कहीं से भी रिलेटेड हो सकती है. सो दी basic idea is the setting the entrepreneurial mindset. Here you see a picture in which कुछ लोग हैं वो एक लॉरी को पुल कर रहे हैं और पीछे से एक पर्सन कह रहा है कि will you please try these wheels, the round wheels. But here you seeing the what is the scenario of today. So it is actually represent the actual scenario of the present time. कि अब जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं और जो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कुछ इसी तरीके से चल रही हैं. मीन्स उसमें उनमें थ्योरेटिकल लर्निंग हो रही है, बस प्रैक्टिकल अप्रोच और स्किल सेट स्किल डेवलपमेंट्स ये नहीं हो रहा है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू giving these wheels to private universities or institute, higher educational institute to give support to student and develop some mindset, problem solving skills. So, so we have seen from that example ki, why we need the entrepreneurial cell or pre-incubation cell or incubation cell in higher educational institute. The next one is the some quotes from Gifford Pinchot, like entrepreneurs or the dreamers who do those who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within our organization. So, what is intrapreneurs? Intrapreneurs is the creators within the institute. These are more valuable in any organization than any entrepreneurs. Entrepreneurs is exist within uh, the same organization. So intrapreneurs, and this is the basic difference between the entrepreneurs and intrapreneurs. So intrapreneurs is basically is more attached to students. Means entrepreneurs may be a teacher who teach or who guide the students. So entrepreneurs is what create a basic or instilling a basic skill set, develop that skill set. So what we see here, what we look here, we need to become innovators and entrepreneurs to make this change happen. तो ये चेंज जो आता है वो अपने में सबसे पहले करना होगा. ये चेंज आता है वो अपने में सबसे पहले करना होगा, क्योंकि by the time we can't generate the problem solving skills within itself, we cannot solve the problem of society, we cannot the problem of others. So in this slide, you have seen the importance of entrepreneurs rather than entrepreneurs. So everyone be entrepreneurs within itself, and university is the basic or the one of important place where these skill set or mindset or innovation type
skill set has been developed. So you have to intrapreneurs rather than entrepreneurs. So what we expect new outcomes only by trying new things, and that means what we what we achieve by doing the new things. We achieve the in entrepreneurial mindset and culture of experimentation by doing the experiments or research. We cannot by not doing the experiment or the practical things, we cannot achieve a result or sort of discussion, and we cannot raise the mind. So when we trying something different or experimental things, so when the results not up to the mark or we fail in one step, two step, तो failure is the ladder of the average success. जब तक हम फेल्योर नहीं मिलेगी तब तक हम अचीवमेंट्स या वो माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाएंगे कि हाँ हमें ये रिसर्च करनी है हमें ये चीजें करनी है. Second point is making the students aware that mistakes are acceptable. So we talk earlier, mistakes करते रहना चाहिए. Mistakes means um, we learn more from our mistakes rather than our success. So इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मिस्टेक्स हो गया, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो गया, ये चीजें जो एक्सपेरिमेंट करने या रिसर्च करने से भी होंगी या अपने में वो स्किल सेट डेवलप करने के साथ ही है. Third one is the allocation time and resources for experimenting and iterating new things. So every the private university or higher educational institute must devote time in doing that thing. Actually, colleges or higher educational institutes में प्रैक्टिकल टीचिंग तो होती है लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स काफी कम होते हैं. इनकी वजह से बच्चा सीख नहीं पाता है. So we have to allocate more time and resources for experimenting, iterating करते जाओ experiment. So developing that nature in students is the main thing. So in 2011, the Eisenberg published six journal papers, and one of journal papers uh, I have collected the things upon the entrepreneurial ecosystem. So there are six basic points that is coming under the entrepreneurial ecosystem, that is policy and regulatory support. The second one is financial support, the socio-cultural factors, the human capital, the non-governmental stakeholders and infrastructure. And last one, the customer and entrepreneur network. The first one is the policy and regulatory support. So policy is basically the first thing key. And that roadmap, everyone follow this policy. Means when you start semester or when you start new course, you have some policy. You have to work upon that policy. अब कैसे इस पॉलिसी पे चलते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू मेक पॉलिसी फर्स्ट यू हैव टू मेक रेगुलरिटी सपोर्ट and based on that policy you must go stick to that policy and go through the process, go through this entrepreneurial ecosystem. The second one is the financial support. This is the main fact
this is the main one of the factor in entrepreneurial ecosystem. So when you have financial support, uh, so you have something to create on that financial support. Means the higher educational, actually, especially mm, the private institutes couldn't get much financial support and not getting the governmental support. In that scenario, you have to create own financial support. Means that you have just prepare your research proposal or idea or proof of concept or then prototype. So based on that research proposal or proof of concept, you have to uh, create that financial from the governmental or alumni network. Later we discuss what is the role of an alumni network and the other thing. The third one is the socio-cultural factors. This the means, but there are several other social factors like uh, if you are attached with some other institution or other organization, means the other labs, so you are getting support from here. Uh, what you make is it directly affected the uh, cultural cultural values or some other things. The human capital is one of also thing when you have when any organization have much human support, it can create great support or entrepreneurial skill set. जब ह्यूमन कैपिटल जब ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। अ, जब कई लोग एक चीज़ को करते हैं तो उनके पास एक सपोर्ट होता है कि यार हमको ये चीज़ नहीं आ रही, दूसरों को ये चीज़ आ रही है, तो वो दूसरा सपोर्ट करेगा दिस वन। एंड दिस other point is non-governmental stakeholder infrastructure. So in private institution, you have to create this that infrastructure. In governmental organization, the government propose a site where you can create your prototype or startups. But in private institution, you have to create by own. आपको अपने तरीके से ही infrastructure तैयार करना होगा. So lot of things coming in this entrepreneurial ecosystem. And the last one is customer and entrepreneur network. After creating the uh, your startup and your prototype, some you have to establish some customer based market, or you have to generate that sense of मीन्स आपको वो सेंस क्रिएट करना पड़ता है, आपको वो विश्वास क्रिएट करना पड़ता है कि ताकि आप 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 आप, आप इस प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर जनरेट करना चाह रहे हैं, जो जो जनता या अलग जो एक मार्केट तैयार करने वाले हैं, उस मार्केट पे जनता का ट्रस्ट हो। These are the factors coming under the entrepreneurial ecosystems. The next one is the key areas of national innovation startup policy. So there are 5 points which is coming under the NISP. The first one is strategies and government. Second one is nurturing innovation and startups, organization capacity, human resource and incentives, product ownership rights for technologies developed at the institute. And the last one is startups enabling institutional infrastructure. Then creating innovation pipeline and pathways for entrepreneurs at institute level, pedagogy and learning interventions for entrepreneurship development, collaboration, co-creation, business relation
relationships and knowledge creation, and then norms for the faculty startups, entrepreneurial impact assessment. So we in this slide we are covering in the oncoming slides. We covering basically the points where we talked here. That is human capital, entrepreneurial ecosystem, and what this area coming under NISP area. So first one is human capital. The NISP area is pedagogy and learning interventions for entrepreneurial development. सो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल सबसे पहले एक करिकुलम डेवलप करना चाहिए। आप जैसे कोर्स स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आप इस कोर्स में आते हैं कि हम इस कोर्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, तो आप फर्स्ट डे से ही एक सिलेबस क्रिएट करते हो कि आप एक लेक्चर प्लान बनाते हो, एक डिलीवरी शेड्यूल बनाते हो कि हम इस पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर लेक्चर्स पे ये यूनिट कवर करेंगे या टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट में यही सब चीज़ें आती है कि हम एक अगर प्री इंक्यूबेशन लैब सेटअप करते हैं तो मतलब आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट करें, कैसे करिकुलम में चलकर हम चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे हम आ सकते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज मोर बेनिफिशियल देन थ्योरेटिकल लर्निंग। थ्योरेटिकल लर्निंग तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कम है, जिसकी वजह से वो हम लोग वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते इन NISP एरिया एंड ह्यूमन कैपिटल। सो जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम ज़्यादा फेल्योर हो सकते हैं और उस फेल्योर से हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। थर्ड वन इज प्रोजेक्ट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट्स हम जो लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट्स कराते हैं तो उसका करने का यही तरीका होता है कि स्टूडेंट्स में वी आर इंस्टिल दैट नेचर ऑफ डूइंग समथिंग। अगर हम थ्योरेटिकल लर्निंग करेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर प्रोजेक्ट और सेमिनार के थ्रू हम उनको उस डायमेंशन की तरफ मोड़ सकते हैं। The last one is a live project in campus linked to academics. Live project means you have doing something वर्कशॉप लाइक थिंग्स। मीन्स वर्कशॉप में दो चार लोग आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं और फिर आप परफॉर्म करते हो। तो इन लाइव प्रोजेक्ट से आप एक बेहतर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो these are the points covered under the human capital. Next one is the entrepreneurial network. NISP area is collaboration, co-creation, business relationship and knowledge creation. The customer entrepreneur networks. अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटर्नशिप स्टार्टअप्स। तो इंटर्नशिप की बात करते हैं तो इंटर्नशिप एक तरीके का एक टाइम बाउंड, स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक एक्टिविटी होती है जिसमें उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। उन असाइनमेंट से वो सीखता है। सीखने के बाद वो अपना एक प्रोटोटाइप डेवलप कर सकता है या स्टार्टर डेवलप कर सकता है। लाइक वो एक नया प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है जो कुछ भी उसने इंटर्नशिप से सीखा है। सेकंड वन इज मेंटरिंग बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो मीन्स जब हमारे पास एक प्री इंक्यूबेशन सेल होगा तो हम उसमें एक एंटरप्रेन्योरियल सेल डेवलप करके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको मेंटर कर सकते हैं। थर्ड वन इज एलुमनाई नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी एलुमनाई हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने कुछ बिजनेस सेटअप किया है, वो आपको लाइव सेशन आके दें या एक
5 डे 6 डे शॉर्ट टर्म कोर्स या शॉर्ट टर्म वर्कशॉप करा करके आपको एंटरप्रेन्योर नेटवर्क्स या नॉलेज क्रिएशन के बारे में बता सकते हैं. Last one is prototyping and pilot support. The prototyping and pilot support means you have to create some proof of concept things and the prototype things, and you have to just generate it by getting some support, uh, infrastructure, financial support. That is coming under prototyping and pilot support. तो pilot support में आपको क्या है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको चेक करना चाह रहे हैं, उसको मतलब देखना चाह रहे हैं कि उस मार्केट में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा इनिशियल फेज में, तो आप उसको पायलट सपोर्ट गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. एनएसपी एरिया स्टार्टअप इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसमें सबसे पहले आता है क्रिएटिव वर्क प्लेस. हमारे पास एक क्रिएटिव वर्क प्लेस होना चाहिए जो प्री इंक्यूबेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल सेल होना चाहिए, प्री इंक्यूबेशन लैब्स एंड टिंकरिंग लैब्स. तो टिंकरिंग लैब्स में बहुत बड़ी बात होती है आजकल. टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में टिंकरिंग लैब्स सेटअप कर रही है धीरे धीरे, ताकि टिंकरिंग लैब्स में आप स्पेस आपको मिलता है जहाँ पे आप कई लोग आपस में बात कर सकते हैं. अगर आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपको एक थिंकिंग डेवलप करनी है, तो वहां जाकर के आप बातचीत कर सकते हैं. उस लैब्स में जाकर के डिस्कस कर सकते हैं. डिस्कस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. And the last is prototyping labs and research labs. So this is the main point in the creating the incubation cell. आपके पास जितनी ज्यादा रिसर्च लैब्स होंगी, जितनी ज्यादा प्रोटोटाइपिंग लैब्स होंगी, आप उतनी ही जल्दी से प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हो, उन्हें बना सकते हो. तो that is coming under the pre-incubation support या pre-incubation labs, tinkering labs. So in these labs, the student perform the basic activity for creating the models, creating the prototypes, and then creating these prototypes. Student or anyone can go for the pilot check or pilot project type thing. The creating innovation pipeline and pathways for entrepreneurs at institute level. So first one is mentoring on market research, social problems. तो स्टूडेंट इन सोशल प्रॉब्लम्स को देख सकता है और सोशल प्रॉब्लम्स को देख करके एक अपना एक मॉडल तैयार कर सकता है कि हाँ व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को देख करके वो एक प्रोटोटाइप बना सकता है. एग्जांपल्स आपके पास बहुत है. जैसे आप ओला उबर देखते हैं, इनका कंसेप्ट ये है कि पहले लोग पैदल जाते थे. तो जो भी इनके फाउंडर्स ने सोचा कि एक सर्विस दे करके या प्रोडक्ट दे करके हम इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को नजर में रखकर ही आजकल जो बहुत से ज़्यादा स्टार्टअप्स डेवलप हुए हैं. Second one is linking curriculum project to 17 sustainable goals of United Nations. So these things, these societal problems may be around the 17 designated sustainable development goals of United Nations. The third one is collaboration. जितने ज़्यादा आपके collaborations होंगे, alumni network होंगे, उतने ही ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. एंड देन मोटिवेशन एंड सपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीआर. एंड आफ्टर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट, क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट, आप आईपीआर मींस पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. The financial support, we have already discussed this financial support that is coming under the organizational capacity initiatives. और इसमें जो चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं, वो स्ट्रॉन्ग लीडर नेटवर्क है, इकोसिस्टम कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिटिव सीड फंडिंग है, प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट है, लाइक एसएमई टाइप्स एंड अदर थिंग्स. So that is the last thing we're gonna discuss here. Like apply for research grant for these specific trust areas. The government of India trying to provide the research grant for various institute for capacity building
incubators, trainers, and innovation ambassadors. Other grants like Mighty, Spark, Seed Grant, Agni. So government is providing these grants to establish the mindset, innovative mindset in faculty as well, student also. And the last one is nation building. तो नेशन बिल्डिंग हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है. सो विद दैट we gonna finish this seminar. Thank you all.